अस्सलाम वालेकुम मोमिनात। मैं सूरह फातिहा के लिए नाम लेती हूँ, आप लोग प्लीज़ सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद पढ़ लीजिए। आज के मजलिस के स्पॉन्सर्स के लिए, उनके मरहुमीन के लिए, द मरहुमीन ऑफ मिर्ज़ा अख्तर हुसैन, मरहुमीन ऑफ एहसन एंड हुसैन फैमिली, कनीस फातिमा, सैयद जाफ़र हुसैन नकवी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन, सैयद मोहम्मद सालिहीन, अमरा खातून, सैयदा क़मर जहाँ बिनते सैयद मकबूल हुसैन, सैयदा खुर्शीद बानो बिनते सैयद नबी हसन, सैयद मुशर्रफ हुसैन इब्न सैयद करार हुसैन, गुलनाज फातिमा, सैयद नादिर अहमद खान, सैयद सज्जाद अकबर रजवी, मोहम्मद मीर खान, रुखैया आबिदी, मौलाना अब्बास हुसैन बाखरी, जाहिदा बेगम, मासूमा चसा, इरशाद राशिद, रजा अली मिर्ज़ा, रईस फातिमा, आज़म हुसैन खान, सैयद मुजफ्फर अहसन, अकबरी खातून, सैयद नासिर रजा रजवी, कनीस हसन, कनीस फातिमा। सूरह फातिहा। मोमिना, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है हमारी लेडीज़ अशरे की आखिरी मजलिस है। कल से हमारे पास अशरा अरबईन शुरू होगा और अशरा अरबईन को मौलाना हुसैन महदी हुसैनी खिताब फरमाएंगे। और हम आप सब तमाम मोमिनीन मोमिनात जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों के ताउन से हमारे प्रोग्राम्स इसी तरह चलते हैं। और कोशिश करिए कि इसमें आप हिस्सा लें भरपूर तरीके से, और ताकि हमारे प्रोग्राम्स इसी तरह चल सकें। आज इस वक्त आज आलिमा राजिया नजवी साहिबा हमारे साथ इस वक्त नहीं है, शायद वो रास्ते में होंगी, आती हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हम लोग लेडीज़ कमेटी के जानिब से और ईसी कमेटी के जानिब से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हर दिन यहाँ हमारे साथ रहें और हमारी महफिल को जीनत बख्शी आप लोगों ने। और अनकरीब अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा फ्यूचर में आलिमा नजफी के साथ, तो हम लोग आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं ताकि लेट आने वाली खवातीन को जगह बनी रहे। प्लीज़ दुरूद भेजते हुए आगे बढ़िएगा। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिना, थोड़ी सी चेंज है प्रोग्राम में। हमारी आलिमा को आने के लिए 2 या 3 मिनट हैं। इस बीच आप लोग एक और सलाम सुन लीजिए, दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर प्लीज। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजम। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। अस्सलाम वालेकुम मोमिनात, ताखिर के लिए माजरत चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अशरा लेडीज़ अशरे की आखिरी मजलिस है और कल से मौलाना हुसैन महदी हुसैनी अशरा अरबईन खिताब फरमाएंगे। इसके साथ ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक के और लेडीज़ कमेटी की जानिब से मैं ख़ावर राजिया बतूल नजफी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में हमारी दावत कबूल की और हमने इससे इस्तेफादा हासिल किया। ख़ावर की सेहत और सलामती के लिए और इल्म में इजाफा के लिए एक बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए। मोमिनात, हमारे साथ इन अशरा के दौरान रेगुलरली पाबंदी वक्त के साथ जमात की नमाज हुई है और हमारी सिस्टर ख़ाहर सिफ्तैन फ़ातिमा हमारे साथ ही हमेशा जमात नमाज पढ़ाती थी। सिस्टर ख़ाहर सिफ्तैन फ़ातिमा के लिए और उनका शुक्र अदा करते हैं हम लोग और इनकी सेहत सलामती और इल्म में इजाफा के लिए एक और बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए। शुक्रिया। सूरत मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और खुशनुदी क़ल्ब मुक़द्दस इमाम असर सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वलइस्मतिल फ़ातिमिय्या वलहिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वलइबादतिस सज्जादिय्या वलमआथिरिल बाक़िरिय्या वलआथारिल जअफ़रिय्या वलउलूमिल काज़िमिय्या वलहुज्जजिर रज़विय्या वलजूदित तक़विय्या वन्नक़ावतिन नक़विय्या वलहैबतिल अस्करिय्या वलग़ैबतिल इलाहिय्या। सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सलवात। Alhamdulillah, the topic which has given to me was about piety
taqwa, and how much we are in need of this beautiful quality and attribute. And today, I know many of you, alhamdulillah, are willing to go towards Arba'een for beautiful journey towards A'imma alayhimus salam. So this ayah in Surah Zumar is something really beautiful to admire our position as a Azadar Imam Hussein alayhi salam, as a Zawwar Imam, as a lover of Bibi Sayyida al Hussein alayhi salam. Surah Zumar, ayat number 73, talks very beautifully that وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. This is something really interesting because in Surah Zumar, yeah, you all know Surah Zumar, which surah is and what does it mean, inshallah, you know, yeah? If you don't know, this is your homework, okay? So Zumar, yeah, what is the meaning of Zumar? We have only 114 surahs. Yeah, Muttaqeen knows everything about Quran, and Quran is not something very, strange for him, because the first surah, after first surah, the first ayah of Surah Baqarah says what? Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab, La Rayba Fi, Hudan Lil. Yeah. This book is for Muttaqeen, for you guys, yeah, Muttaqeen, the pious one. And there are so many beautiful stories about how to get connected to this amazing book of Allah Tabarak wa Ta'ala. I think Leslie Hazelton, she's a very good writer, and maybe you have studied and you have read her books. When she has aimed for write about our Prophet, the Prophet of Muslims. She's in her maybe late 70s or 80s, yeah? And she's a Jewish lady. But when she said, I want to write about the Prophet of Muslims, so she said, okay, let me study a bit this book of Allah, the book of the Prophet. And when she started to study our book, she said, no, first I have to learn a bit this Arabic, language. In that age of 70s, she started to learn Arabic. When she learned Arabic, that is her conclusion, and you can all see it. It's on definitely TED Talk shows and also on YouTube, that Leslie Hazelton, what she says that when I study a bit of Quran with knowing the language, yeah, and she's giving the example of Suratul Ham, yeah, surah of gratitude. That is the importance of, gratitude, because the only surah which is wajib is hamd. अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना हम्मादून, सबसे पहले जन्नत पे कौन जाएंगे? हम्द करने वाले, नैगिंग करने वाले नहीं, शिकायतें करने वाले नहीं, खुश रहने वाले, positive देखने वाले. हम्माद यानी the one who's always appreciating. So Surah Hamd is wajib because Surah Hamd wants to give us the beautiful glasses, yeah, vision of to praise Allah's amazing bounties. So this lady says, when I was reading this book of last final prophet, in the beginning I was thinking I'm so much, a stranger. Nothing is familiar for me. Like if we go to China, for example, we don't know the language, yeah? We don't have any relatives, we don't have a house, nothing. For example, you don't study anything about the city where you go and you are just standing there. And then later on, when she studied a bit, now she said, I'm familiar with this book. And she's giving just example that Surah Hamd, for example, if Surah Hamd has 29 words in Arabic, for translation, it will take more than near 79 words. So she's saying the translation of Quran is look like a shadow. Lagta hai saya hai, khud Quran nahi hai. Yeah? So it's really necessary कि हम क्या करें कि हम कुरान से आशना रहें.
Surah Zumar, what does it mean? Yeah, which number it is. So you know the streets of the surah, the valleys of the surah, the beautiful Q Fatima has done very beautiful work about the cities of the surah. So inshallah, we are going to learn more and more and more, especially in this month of Muharram and Safar. Surah Zumar says, the kuffar, the disbelievers, yeah, because they end up to hellfire, to Jahannam. So the malaika, the angel, are just dragging them, just pulling them, just taking them by force towards Jahannam. That makes sense. Yeah, we all know that no one wants to go to the hellfire and someone has to push you. But the next ayah, 73, says, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا يَسِيقَ الَّذِينَ. So how come Allah Tabaraka wa Ta'ala is giving this order to Malaika that, some muttaqeen, yeah, you have to push them, drag them towards Jannah. So it doesn't make sense. Jannat, kaun nahi jayega. We all want to go, yeah. We are eagerly waiting to go to that beautiful place. So how come they are pushing muttaqeen, the pious people, to go to Jannah? So the answer, you can find in one of the hadiths of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. For the lovers of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, because we are just devoting our life for Aqa, for Mawla, for Imam. Zara tasavvur kare, agar Imam na ho, to hum kya ek dusre se milte? Hamari koi identity hoti? Nothing. So the way we are dying for him in this dunya, Hadith says, on the first night in the graveyard, Imam will come and say, Ana Ali wa ana Husayn alladhi kunta tuhibbuhu. Itne naare haydari lagane walo, now come. Ab dekho, tumhare matam ka asar, तुम्हारी आजादारी का असर, ये परचम, ये आलम, ये सियाह लिबास, ये नोहा, ये मरसिया, ये मजलिस, ये नियाज, ये हसीन से वॉलंटियर्स, ये सारी जहमत का नतीजा जैसे ही रूह बदन से निकलेगी फौरन नजर आएगा. अभी जन्नती जन्नत में नहीं गए होंगे, yeah, they are not going inside the Jannah, they are just outside of Jannah. They will desire to meet Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Ya Rasulallah. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Allahumma salli ala. Yeah, they are longing to visit Imam even before going inside the Jannah, and Allah will listen to their desire and wish and this tamanna, and they would have a sitting with Imam Hussein alayhi salam outside of the Jannah. And Jannah is becoming definitely ready for them, and the huris of Jannah and Malaika, they will come inside the Jannah. Jannah is waiting for you. But what will happen? Because we are, desperately waiting to meet more and more our Mawla and Aqa. So Hadith says, Huddasul Hussein, Mawla Hussein ke ishq mein jo gharq ho gaye, Mawla ko dekhne mein itne magan hai कि ना उन्हें हूर की आवाज सुनाई देगी, ना फरिश्तों की आवाज सुनाई देगी. Unfortunately, आजकल बच्चे, sometimes they are on screen and mom and dad and, siblings are calling them, but they are not, even, for a second, they cannot get distracted by whatever they're watching. So, hadith में लिखा हुआ है, لا يرفعون رؤوسهم.
जो नूर इमाम हुसैन को विजिट करेंगे, देखेंगे, वो अपना सर भी नहीं उठाएंगे, उनसे कहेंगे आज जो जन्नत इंतजार करे, कहेंगे हम अपने मौला और आका के साथ कलाम करने में इतने मसरूफ हैं कि हमारा दिल ही नहीं चाह रहा हूरों को लब्बैक कहे या गिलमान को लब्बैक कहे या फरिश्तों को लब्बैक कहे। कौन है वो लोग जो हुद्दासुल हुसैन है, जो इमाम के इश्क में गर्क हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें कहते हैं इंडल्ज हो रहे हैं। कहते वही लोग हैं जो दुनिया में अहादीस आइम्मा अलैहिस्सलाम, कलाम इलाही, कलाम इमामुल मुत्तकीन से इश्क और मोहब्बत करते हैं। So if we are so much engrossed to the sayings of मासूमीन अलैहिस्सलाम in this दुनिया और वो सही पक्का इश्क हो, तो कहते हैं वहाँ हमें टाइटल मिलेगा हुद्दासुल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का। One of the beautiful saying of Imam al-Muttaqin alayhi salam is that the biggest khidmah, the biggest service which we can give in this dunya is to serve yourself. सबसे बड़ी खिदमत ये है कि आप अपनी खिदमत करें. You have to take care of your soul, your nafs, your mental state, your physical health, whatever we need emotionally, physically, mentally, spiritually. If we are not doing injustice towards ourselves, then Mawla Imamul Muttaqeen, the crown of taqwa, inshallah, Imam is going to put on your head, because he is Imamul Muttaqeen. Because if I'm taking care of myself, there's a beautiful sermon in Nahjul Balagha. Some sermons are tafsiri sermons, some are akhlaqi sermons, some are tarihi sermons, some are sermons which talks about future, prediction, patient goi wale sermons. So the beautiful word of Nahjul Balagha is just there waiting for you. I don't know when you people are going to open it up, and inshallah to visit, to become a student of Imam by having this book in your day-to-day life. I totally suggest you, because this is the Kitabut Taqwa, the book of piety, Nahjul Balagha. The second name of Nahjul Balagha is Taqwa ki kitab. Taqwa ki kitab hai. So because इसका end जो है वो short sayings के साथ है, जिस तरह हम कुरान के नहीं करते. We start from Surah Naba, Surah Qul Huwallah, easy surahs, short surahs. So the last part of Quran is mostly छोटे-छोटे surah है, तो easy है उसको समझना. इसी तरह नहजुल बलागा का last part भी हिकमत है और short sayings हैं. So उससे हम शुरू करें, that would be more practical and doable. Alhamdulillah. And you can do wonders. You can have amazing sayings of Ma'sumin in your day-to-day life. In one of sayings, Imam says, कि दूसरों पर रहम खाते हो, usually you say, oh, वो बेचारा बच्चा देखो ना, oh, he can't go to the school, look at him, he doesn't have good parents or whatever. Imam is saying, हमेशा दूसरों की बातें करते हो, दूसरों पे रहम खाते हो, वो बेचारा, ये बेचारा, अपना आप को नहीं देखा, तुम कितने खुद बेचारे हो. You are not giving good attention to yourself. अपनी आखिरत के बारे में भी सोचो, दुनिया के बारे में भी सोचो, और ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा. क्योंकि अक्सर लोग क़यामत के दिन बगैर लिबास के महशूर होंगे. लिबास, ड्रेस नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि लिबास तक़वा ज़ालिकल ख़ैर. So the true लिबास जो है वो तक़वा का लिबास है. उस लिबास की हम फिक्र करें. You have heard a lot about the kafan, the concept of kafan, and I have seen many young girls, youngsters, they have started to cover themselves more properly after knowing the kafan, because our kafan is a bit different from the kafan of boys and gents. They have few pieces, we have more pieces, because we are more, mashallah, the beautiful
we can say Jamal Ilahi ki jalwa. Yeah, we reflect the beauty of Allah Tabaraka wa Ta'ala. They have this much beauty, limited, therefore, limited attractions. They have limited hijab, bicharo. But we have more, alhamdulillah, therefore we have more hijab, yeah? So more, that the scarf which we put in kafan, it means a lot. I remember one of my friends, when the moment she said, hey, kafan mein scarf bhi hai. Oh, main to nahi pehnti. So hadith says, Firishte haste hain, ek jagah haste hain, the angels with this smile. When they smile, jab wo dekhenge a person who's not like respecting the heavenly dress, the hijab, yeah, in this dunya, and when she get forced to wear the kafan, Firishte kehenge sari zindagi to nahi pehni, ab bichari pehen rahi hai, something like that. So I know जो नहीं पहनते हम उनका बहुत एहतराम करते, no doubt, हमने हमेशा पहले भी कहा अमल और आमिल को अलग करना है, doer और जो action है वो बिल्कुल अलग है, respect उसकी है, उस इंसान की हमेशा है, वो काम अच्छा नहीं है. तो मैं आज आपके सामने कफन के कुछ वाक़यात सुनाना चाहूँगी, because kafan is really important. Kafan means, again our dress of taqwa, So इसमें ये बताया जाता है कि I have collected some female fascinating sahabiyat, companions and narrators. They used to live at the time of Aima alayhi salam, and Aima alayhi salam, they have given themselves kafan to those ladies. Yeah, ladies mein. Habbabe Walibiya. Habbabe Walibiya, one of the beautiful, outstanding lady, that she was in the time of first Imam till ninth Imam. Have you heard Habbabe Walibiya? Yeah? The Sahibatul Hisad, the one who used to have a divine pebbles as a miracle with her. So she used to live in the time of our first Imam. And when she noticed that people are getting so much confused about Imama, yeah, so she said, yeah, Amir al-Mu'mineen, give me some miracles, some evidence, some proof, something. I really want to help out people to form their faith about Imama. Imam just took some pebbles from the same place and he melted them nicely with his hand, yeah, with Yadullah hand, and then he stamped his stamp, which used to be usually on their fingers with rings. So, and he said, whoever can do the same thing, that person would be the Imam of, next time, Imam of the time. Hababa Walibiya, she took those pebbles as a dalil, as a proof, and some ahadith, and then she started to preach, yeah, in the time of Imam Ali alayhi salam, because he is the first Imam. And only Imam Ali, he got this chance to rule for less than 5 years, we all know. And after first Imam, the final Imam is going to rule, inshallah. In Babul Hawa'ij, inshallah, I'm going to recite from tomorrow, Ashra, and also in JCC, Imam Barga, from Saturday, I think 7-8 days, inshallah. So I will try to make you, inshallah, understand the ruling, the hukuma, the wilaya of first waliullah and the last waliullah, because whenever I'm studying about the status of women, yeah, and libasul taqwa of us in the eyes of Ahlul Bayt alayhimus salam, I always refer the time of first Imam, Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Why? Because he had this opportunity. Yeah, if you rule a country, then you can know that how much that Imam gives importance, freedom, izzat, dignity to women, yeah, in practically in society. And you can't believe it. All the outstanding female companions, which I know most of them, like Ramisa, like Sauda, like Nafisa, like so many, Zarqa, Ummul Khair, they were all in the time of Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib. Especially, unfortunately, we know that
Imam Ali alayhi salam, in his very little period of a government, he had 3 battles to fight, unfortunately, yeah? Like 25 years, when he was in opposition, nothing happened. Imam was just compromising the way Allah allows him to compromise because of unity, yeah? Imam didn't put any tension and pressure, no ikhtilaf, no ladai, no jhagda, inshallah. Aap Zaidi, aap Ja'fari, aap I don't know यहाँ पर कौन बैठे हैं, I don't know किस इमाम से लड़ाई झगड़ा is haram, या तकवा के खिलाफ है. My father always tells me कि मौला अली यानी unity, मौला अली यानी प्यार, Mola Ali, yani no jhagda, no fasad. You know, if you are famous in the society, in your friend circle, that this person is just, you know, even jahan ladna chahiye, wahan bhi nahi ladti. You know, itni pyari hai. If you will know for this quality, then you are the true lover of Mola, Imamul Muttaqeen, Mola Ali. 25 साल तक आपने कुछ लड़ाई झगड़ा फसाद, एक नया इमाम बारगाह खोला नहीं? हम लोग खोल देते ना, सही मेरा है इधर आ जाओ सब, लड़ाई झगड़ा आना ईगो नहीं. लेकिन you know, within that less than 5 years इमाम को रूल करने दिया नहीं. which how many battles are there? Jamal, Siffin, Nahrawan. So because of all these battles, we get to know the role of women in the time of Imam Ali alayhi salam. Because in battlefield, you can see the role of women, because the way we know about our Sayyidah Zainab Salamullah alayha because of Karbala. And Sauda Hamdani, for example, she went all the way from Basra, Kufa to Sham in the time of Muawiyah. Can you believe it? She said, you know, Ali has trained me. Yeah, Bint Ali. I am the follower of Bint Ali. Ashja'un Nas. They have trained me to not accept the zulm, injustice. And your representative in my city is doing all those zulm and injustice. So I'm here to talk, about all the zulm. You have to ask your representative, your wali, your hakim to leave our city. And Muawiyah was just laughing. He was saying, how come you can talk to me in the way you're, complaining? So then she cried and she said, okay, if you don't want to listen to me, sallallahu ala al-jasad, salvat khuda bar un badan, us badan par jab wo zameen mein gaya, justice aur adalat bhi mar gayi. तो मुआविया और दरबार वाले हैरान हुए, जैसे क्या, कौन है वो? कहा वो मेरे आका, मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन है. तो सबने कहा हमें याद है इन जंग सिफ़ीन, the way you are sitting on the camel with red hairs, सुर्ख बालों वाली ऊंट पर तुम बैठी हुए खुतबा दे रही थी. खुतबा दे रही थी किन के दरमियान? सोल्जर्स के दरमियान. Because in the time of Mawla Amir al-Mu'mineen, again there was so much confusion. कुछ वो लोग आते थे, मुआविया खरीद लेता था, 1000 का लश्कर एकदम से 500 बन जाता था, चले जाते थे. They would get easily deceived by Muawiyah, So she was there to forming the faith of the soldiers of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Therefore Muawiyah and Darbar of Muawiyah's people, they would say, हमें याद है कि तेरी ज़बान बहुत से मुजाहिदों की तलवार से भी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक थी, क्योंकि तुमने जिनका ईमान डाउटफुल था उन्हें भी वापस बुला लिया, जो भाग रहे थे वो भी वापस आ गए, जो सोच रहे थे उनको तूने साबित कदम कर दिया. Then they literally they ask her, they tell, just say all your sha'iri and sermons in front of us the way you have done in Jange Siffin. And she said, no, वो टाइम गुजर गया, मैं दोबारा से उसको दोहराऊं.
तो मुआविया ने खुद से, दरबारियों ने खुद से कहा, we all memorize your sermon, O Sauda Hamdani. We all memorize your sha'iri, yeah, the poetry which you have done in the battlefield of Siffin. So देखिए कैसी ख़वातीन होती थी, यानी the way they used to memorize the sermon of Amir al-Mu'minin alayhi salam. और मुआविया कहता है कि मैंने मौला के सरमन्स को याद कर करके अपने सरमन्स में डाल डाल के मैंने अपनी एलोक्वेंसी को बढ़ाया. ये ऑलवेज एडमिट्स, वो कहता है. और यहाँ पर देखिए मौला के गुलाम और कनीज़ों में इतनी जुर्अत आ गई थी. तो जब मुआविया ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो जो जुल्म तुझ पर किया है मेरे हाकिम ने, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने, तो जितना पैसा तुझसे लिया है, या आई विल आस्क हिम टू गिव यू बैक. बट सौदा शी सेज नो, I didn't come for just my haq. I have come as a representative of my city, my town. So you have to, yeah, like fix the problem, the root, not only my money in one case or in one incident. No, हमें वो बंदा नहीं चाहिए. We don't want your representative in our city. So वो बड़ा हैरान हुआ, कहा ये कैसे हो सकता है. तो फिर सौदा ने एक मिसाल दी. सौदा ने कहा I remember once when I came to Kufa with one little complaint about Imam Ali's representative, and Imam was reciting some mustahab namaz. The moment Imam felt that someone is waiting, Imam ne namaz jaldi khatam ki, and then Imam listened to my complaint, and that Imam started to cry, weep and cry because of that zulm which is going on. That was, she was telling me, little, उसने थोड़ा सा ज़कात ज़्यादा ले लेता, 1-2 दिरहम ज़्यादा ले लेते, फिर भी लोग डायरेक्ट आते थे इमाम के पास. And then Imam wrote a letter, yeah, इमाम ने खत लिखा और इमाम ने कहा सौदा हमदानी, you are the one who's going to just, के हटा दो, आज़िल कर दो मेरे representative को उसकी सीट से, तुम्हें मैं ये अथॉरिटी दे देता हूँ. और वो खुशी खुशी चली गई थी. जब उसने ये कहा, ये वाकया सुनाया और अपनी एलोक्वेंसी के साथ दरबार मुआविया में सब के रोंगटे खड़े हो गए. सबने कहा अब तो हमें भी करना पड़ेगा. कहा सौदा हम भी हटाते हैं अपने नुमाइंदे को, देखें हम भी हटाते हैं, बट फिर तुमने जाकर हमारे मदहो सना में खुतबा देना है, हमारे लिए शायरी करनी है. यू हैव टू टॉक अबाउट अस. सौदा ने कहा कि तुम मुझे इतना तो क्या, इससे भी ज्यादा तमाम जितने नुमाइंदे सबको भी हटा दो, तो मैं सिवाय अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन के किसी के नगमे नहीं गा सकती. या अली या देखा आपने मौला अली के चाहने वालों का विजन कितना क्लियर होता है, या फोकस, यकीन. हब्बाबे वालिदिया सेम वे, she used to take that miracle and she used to preach and propagate about imama until the time of fourth imam comes. And she was definitely that time she was a bit old and weak person because of her age. And Imam Zainul Abidin, Sayyid al-Sajjadin, he was prolonging his sajda, and she was waiting and waiting to meet Imam Zainul Abidin after Karbala. And then when she noticed that Imam is not, finishing his namaz, so she said, okay, I have to leave now, inshallah, any other day I will come. She was just leaving the masjid. The same moment, Imam is just indicating towards her. Imam is saying, Habbaba, come this my side. And she says, the moment Imam says Habbaba, Imam ne ishara kiya, I noticed, मैंने अबा के अंदर देखा कि मैं अब वो वाली हब्बाबा नहीं हूँ, जवान, तरोताज़ा, पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक. तो सिर्फ एक मर्तबा ज़ुलेखा जवान नहीं हुई, हमारे आइम्मा ने बहुत सी फीमेल कंपेनियंस को जवानी दी है. तारीख पढ़े आपको पता चलेगा. Now she has got a new life, now she started more to preach, to propagate about Islam. Her daughter Fatima,
she's very famous in history too, as a Razia, as a Khatiba, as a narrator, as a Muhaddisa, the one who used to learn from Aima alayhi salam. And in the time of Imam Baqir, Imam Sadiq, we call them Asr Sadiqeen alayhi salam. They were the best student of Aima alayhi salam. And one thing I have noticed always, that Hababa Walibiya, she would go to the masjid, the main public place. Direct access to masjid was available in that time. देखे ना, आजकल बहुत से लोग हैं, आज से आप I think अगर 50-60 years पहले देखें तो ख़वातीन के लिए बहुत जगह नहीं होती थी ना मस्जिदों में. अभी भी बहुत से ऐसे countries हैं, they are not that active in Imam Barga or in masjid. But that was a truly modern time. कि जहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही होती थी, हेल्दी एक्टिविटी, इल्मी गुफ्तगू, वहाँ ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था. Until the time of 8 Imam, Hababa is still alive. Hababa ने इमाम रज़ा अलैहि सलाम को पाया. और इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने हब्बाबा को बता दिया, he said to her that तुम्हारी उम्र इतनी है, अब तुम मरने वाली हो, and my aba, I'm giving you, gifting you as a kafan. So हब्बाबा भी कफन इमाम रज़ा अलैहि सलाम से दुनिया में गई. नंबर 1. अगर शतीता का आप पढ़े, you will be more amazed. Shatita, she used to live in the time of the father of Imam Rada alayhi salam, Imam Kazim alayhi salam, yeah. And it's really, really very, very authentic sayings we have about her beautiful journey. That once Muhammad bin Ibrahim, when he was going towards Medina from Neshapur, you all know, which is nearby Mashhad Muqaddas inside Iran. So Shatita used to live in Neshapur in Iran. And sometimes they would go, one of the Numainda, they would go to take some homes money, yeah, and some tabarrukat to Imam of the time. And Imam Qadim al-Islam used to live in Medina. So this person, Muhammad, he takes all the homes, 30,000 dinar, 20,000 dirham, 2,000 dresses. People have given so much, clothes as a homes. And then when he was living at the Neshapur city, a lady, she comes, Shatita, she says, I have only 4 dirham, only 4, and 1 piece of cloth, yeah, which I think it's khums wajib ho gaya. Khums is really important, we all know. So when he took all the money to Imam, and Imam himself said, where is that 4 dirhams of Shatita? Mujhe wo chahiye, Shatita ke 4 dirham chahiye. You can't believe it. Baqi jo itne bade raqam the, we are looking at, wow, look at her. She's so lucky. She's running a business. She has such a rich husband. She's earning a lot. She's going every year to Karbala. I can't do anything. No, don't judge yourself the way we are judging. Because people, they were just laughing at Shatita. Ki ye 4 dirham Imam kya karenge? It's so little. And itna sa piece kapde ka, it's nothing to do. But what happened? This is something really strange. That Imam ne kaha, I'm not accepting all those monies because they were not khalis, pure, halal. But this money of Shatita. Then Imam has given 4 dirham tha na? 4. तो कहते हैं ना, 1 कदम उठाओ तो 10 कदम अल्लाह उठाता है. तो इमाम ने कहा, हर एक दिरहम के बदले में 10, 40 dirham, give her back, and tell her she's going to live only for 19 days after, when you reach to your city and when you have a conversation with her, she is going to live for 19 days only, and 24 dirham she has to spend after her death, and 16 dirham in these 19 days she can spend it. Everything was fixed, everything was clear. And then this was the nasihat and wasiyat of Imam Kazim alayhi salam, that tell her that ladies can give her ghusl and kafan. I'm sending my kafan to her, but ghusl और कफन के बाद नमाज में खुद पढ़ूंगा. I will come to Neshapur, but oh Muhammad, don't tell anyone, yeah, like
You are not allowed to tell that I'm the Imam of the time. I will come, I will do. And Muhammad, he says that 19 days के बाद बीबी शकीता दुनिया से गई, गुस्ल कफन हो गया. और कफन की भी बहुत प्यारी दास्तान है. इमाम ने कहा, it's not a kafan, you know, the kafan, just a kafan. No, it's a kafan. The kafan is made by the cotton of Baghe Fadak of Fatimatu Zahra Salamullahi alayha. यानी इमाम का अपना कफन और उनकी सिस्टर हुमैदा ने उसको बनाया था. ऑल डिटेल्स आर देयर, सो ब्यूटीफुल. और फिर कहते हैं इमाम तशरीफ लाए. इमाम ने खुद नमाज पढ़ाई. नमाज पढ़ाने के बाद जब कब्र में डाल रहे थे बीबी शकीता को, तो इमाम ने खाके कब्र अबा अब्दुल्लाह को बीबी शकीता के साथ डाला. अब आप सोचें, अब हम तकवा के ज़रिए, इमाम ने फिर एक जुमला कहा, हाँ मोहम्मद से एक जुमला का, ये जुमला बहुत अहम है. इमाम ने कहा कि जो भी शकीता की तरह पाक होगा, प्योर होगा, रिस्क हलाल और हलाल, तय्यब ताहिर, ज़बान हलाल, दिल हलाल, यानी पाक पाक पाक, जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस वक्त भी हो, हम आ जाते हैं. क्योंकि इमाम की कोई किसी से कोई पार्टी तो है नहीं, यू नो. इमाम का ऐसा थोड़ी है कि ये अरब है, ये नाना अरब है, ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, ये इधर है, ये उधर है. नो, इमाम का रिलेटिव कौन है? जिसके पास तहारत है. कुल्लु नक़िय्यिन व तक़िय्यिन मिन आली, जो भी नकावत और तक़वा में बुलंद बाला हो, वो मेरी आल में से है. ये हदीस है, आल है, आल. हम आले रसूल में शामिल हो सकते अपनी तहारत के जरिए. और एक और वाक़या इस ज़माने का मैं आपको सुनाऊं कि इस दौर में, इस ज़माने में मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी कहते हैं कि मोहम्मद काज़िम यज़दी फ्रॉम सिटी ऑफ यज़द ही वाज. He says that I used to live in Najafi. Yeah, once in holidays I wanted to go back to my town, Iran, years. So I said, let me take my kafan with myself. And his kafan was a very precious kafan because, you know, he has wrote whole Quran Majid on his kafan. Where? Sitting inside the haram of Amir al-Mu'mineen. He was sitting there and he was writing Quran on his kafan. So kitna qimti kafan hai. Not only that, he wrote Ziyarati Ashra, Aminullah, Ziyarati Jami'a Kabira in the haram of Imam Hussein alayhi salam on his kafan. So kitna qimti kafan hai na? Very, very valuable kafan. Because bahut mehnat hai pura Quran likhna. Now he took that kafan with himself, and the day he reached to city of Yazd, he got this dream that, oh Kazim Yazdi, you have to give your kafan to Kareem, to someone Kareem. So he went to see where's that Kareem. The next day he couldn't find him. He was asking everyone, कौन मरा है? कोई करीम नाम का मरा है? किसी को कफन चाहिए? मुझे कुछ इस तरह से ख्वाब आया है. I said, no, we don't know. Who's Kareem? Who's coming? Everyone is asking. No one. He was a marja. Everyone is giving respect to him and asking literally, Kareem, kaun hai? Kareem, kaun hai? Kareem. Next day, again, the same message comes to him in his dream, and he is looking for Kareem. He couldn't find. No one knows who's Kareem. The third day, when he got again the same news, he said, now I have to do something. What he did, he went to the ghusl khana, yeah, mayyat. Or jahan ghusl di jati. He saw that, oh, light is on. So he just knocked the door and he said, anyone is here? Can I give my kafan to someone? Kareem naam ka koi hai? So someone came and he said, oh Kazim Yazdi, give me your kafan. So he was so, amazed, and he got the kafan. And after kafan and ghusl and everything, he asked that guy that, who is this Kareem? And how come you know my name? He said, even I don't know who is this Kareem. The person who bring you here, the same person has given message to me, and I'm here too for ghusl. So I have the responsibility of ghusl, and he has the responsibility for kafan. And then he asked the next day to his son that, who is your father? He said, my father is such a simple person. उनका काम क्या है? हम्माली, जो सामान उठाते हैं, yeah? Or just say, even in some, I don't know, in airport, someone comes and help you out, that kind of hammal, just a hammal.
बट मेरे बाबा की एक आदत थी कि हमेशा अपने ज़माने के इमाम को हय्य हाजिर समझ के इमाम को याद करके हर रोज़ इमाम को सलाम करके इमाम के इश्क में खुलूस से काम करते थे। सच्चा सीधा साधा मेरा बाबा था। तो look at this story, what it says. काज़िम यज़दी बहुत बड़े मर्जा है और ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है कि अगर if you take care of yourself as a taqwa, you know, Allah तबारक व तआला is giving this order to Imam of the time कि इतना महंगा कफन आपको मिल जाए, आपकी किस्मत बदल जाए। कितने हम खुश नसीब हैं, you know how lucky we are that even this few years of life, कहते जब हम इस दुनिया से जाएंगे हमसे पूछा जाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्थ, how much you have spent in this earth, in this planet, in this transit. We would say yawman, then we say no ba'da yawm, you know, a day. Then we say no, even a day, not a day, half of the day. This life is less than a day, and we are so much worried about only this life, and we are just neglecting sometimes the real rebirth and life which is eternal and forever. So one of the Surah Ahzab, the first ayah of Surah Ahzab says about Nabi. Yeah, ittaqillah ya ayyuhan nabi ittaqillah. Allah Nabi ko bhi keh raha hai taqwa ikhtiyar karo. Kyun? Why? Because after the battle of Uhud में हम मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी ना, डिफीट हो गई थी, ठीक है? तो कुफार ने आकर कहना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, you listen to us, we will listen to you, because you know आपको तो शिकस्त हो गई। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, मुझे हुक्म आया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने फौरन ये आयत नाजिल की कि no compromise about religion. इत्तक़िल्लाह या अय्युहन नबी, इत्तक़िल्लाह, तक़वा, be firm about your principle and rules। उसको पूरे वजूद के साथ। तो आप देखिए ना कि अगर कोई आपसे कहता है मेरे लिए घर बनाओ, ठीक है, मैं जल्दी से बस ख़त्म करती हूँ, टाइम नहीं है। If someone tells you that build a house for me, but take it easy because I don't have so much to participate, or my funds are limited. So what do? You never compromise with the foundations of the house, yeah? You never compromise with something which is really necessary, like if you are using cement or wood or whatever. You will say, yeah, I can compromise here, I can put some simple tiles for you. The same thing happens about deen and religion. Yeah? Usul-ud-deen and zaruriyat-e-deen. Namaz, we cannot compromise. Roza, we cannot compromise. We can't say, okay, some people, they used to come to Rasulullah and they would say, Ya Rasulullah, hum namaz nahi padenge. We will do everything. Ya namaz nahi padenge. हम मुसलमान होना चाहते हैं। रसूल फरमाते हैं तो ये क्या बात हुई? Because namaz they have to do every day. Homes once in the year. Hajj once in the life, and what else? बाकी सारी चीजें तो कभी कभी होती है, लेकिन हम औरतों के लिए पर्दा भी डेली है। हम बहुत लकी है क्योंकि मर्द they can do wajib for few hours, namaz is just for few hours. Wajib has more sawab than mustahab, yeah, because mustahab has less sawab, therefore Allah made it mustahab. Wajib has so much power, so much vitamins, therefore Allah said you have to do it. And bicharo mard, they do wajib for little time, namaz kuch. लेकिन हम औरतें कभी कभी जब जॉब पे जाते, constantly we are covering our body, our head, so that is, we are in the state of wajib. We are so lucky. Ulama कहते, like my brother, my whole family is alhamdulillah, most of them, they are alim, and I love turban, I love qaba, and they say we put turban, but it's mustahab, it's not wajib, yeah, even in heat, in Garni, in June, July of Iran is very, very hot, but we get sawab of mustahab. But Razia, you're so lucky, even you cover your head, you get sawab of wajib. So we are so lucky. So some people, they say, yeah, we can fast 15 days of Ramadan, not other 15 days. Some people, they have given this kind of fatwa that you can just fast for 10 hours, wherever you are. So easy lena. ये सारी बातें नबी के ज़माने में होती थी,
और अल्लाह ने the first ayah of Surah Ahzab, that Allah is directly addressing the Prophet of the time, Ya ayyuhan Nabi, ittaqillah. Zara sa bhi idhar udhar nahi hona, no compromise. If I compromise in building the house and I say, okay, she doesn't have the funds, so let me just compromise in pillars, so I'm a cheater, yeah? मैं cheat कर रही हूँ? नहीं. ज़रूरियात दीन, वाजिबात दीन, we cannot compromise at all. और इसी के लिए बार, can you believe it? How our Imam in Karbala, he would say, An-nas abidud dunya wad-deenu la'iqun ala alsinatihim. ये क्या हो गया है? लोग तो दुनिया के बंदे बन गए हैं, जबान पर सिर्फ दीन चलती रहती है, बोलने में बहुत दीनदार है, पटर, लेकिन जब प्रैक्टिस में आते हैं तो कल्लत दय्यानून। ये मेरे आका, ये इमाम हुसैन का दर्द है। अगर इतनी मजलिस से हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अरबईन के बहुत करीब जाने वाले हैं। If we can't feel the pain of our imam, जो दर्द है, जो पेन है कि लोग उसूल और ज़रूरियात और वाजिबात को नहीं समझ रहे, तो फिर हमने मौला की कुर्बानी को नहीं समझा। आइए अपने दिलों को ले चले उस वतन की जानिब, जो वतन हमें इतना अजीम बनाता है, जिस वतन की वजह से हमारी इतनी इज्जत है। तो जनाब ज़हरा आपके आंसुओं को मोती में तब्दील कर देती है। कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स इमाम हुसैन के हरम में था और इतने में एक शख्स ने आकर उसको किताब दी और कहा, ये किताब है, आपको चाहिए? तो कहा, हाँ, मैं कब से इस किताब की तलाश में था। खोला तो देखा एक मरसिया है। उस मरसिये को पढ़ा मौला के हरम में। मरसिये को पढ़ रहा था तो इतने में देखा एक सैयद आया है, बहुत ही खूबसूरत। बाद में पता चला ज़माने का इमाम है। और वो मरसिया, कहते हैं अल्लामा अमीनी ने किताब अल-गदीर में लिखा है कि जो भी ये मरसिया अपनी मजलिस में पढ़ेगा, इमाम असर को बुलाता है, इमाम वहाँ आ जाते हैं। या इमाम, हमारी 2 दिन की जिंदगी है, हमें लिबास तक़वा। या इमाम, हम चाहते हैं आपके बहुत अच्छे चाहने वाले बने, हमारे इरादे कमज़ोर है, इमाम आप हमारे लिए दुआ कीजिए। वो क्या है मरसिया? वो मरसिया ये है, अयुक़्तलल हुसैन बिकरबला वफ़ी कुल्ली उज़्विन अनामिलिही बहरुन। क्या उस हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया जिसकी हर उंगली से दरिया बह रहा था? वो वालिदहु साक़ियल कौसर गदन, वो आका जिनके वालिद यानी इमाम अली साक़ी कौसर है। वमाउल फुरात लहा महरा, जनाब ज़हरा की महर में आबे फुरात। अज़ादारो, आइए हुसैन के साथ चले। करबला में 2 मकाम पर 2 हस्तियों ने कहा महलन महला। एक जनाबे ज़ैनब कुबरा है जो कहती है, ए मेरे हुसैन इतनी जल्दी ना जा मक्तल की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता, महलन महला यब्न ज़हरा। आपको मालूम है इमाम हुसैन जिंदा थे और यजीदी गारतगर बार बार कहते थे, हुसैन तू कब मरेगा, हमने खेमों पर हमला करना है। वो बहुत लालची थे, वो बहुत बेगैरत थे, वो सब हराम के माल खाने वाले थे। ज़ैनब कुबरा ने चीख के कहा, है मेरे माँ जाए, इन बेगैरतों के दरमियान हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? महलन महला यब्न ज़हरा। और दूसरा मकाम, जब इमाम हुसैन ने कहा, मेरे अली अकबर जरा आहिस्ता कदम उठा, कहा बाबा आपने इजाजत दे दी, अब मुझे जाने दे, आप क्यों पीछे आ रहे हैं?
कहा है बेटा इस्लाम में मुस्तहब है कुर्बानी आगे आगे हो, कुर्बानी देने वाला पीछे हो। ए मेरे अली अकबर, काश तेरा कोई जवान बेटा होता, तुझे पता चलता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। ये वाहिद मकाम है जहां जनाब अली अकबर जब शहीद होने वाले थे तो दुश्मनों ने आवाज बुलंद की और कहा ये तो शबीह पैगंबर है लेकिन इसका नाम अली है, इसलिए सब आकर अपना बुग़्ज़ और कीना अली पर यहाँ आकर तमाम करे। ए अज़ादारो, वाहिद मकाम जहाँ ज़ैनब खैमे से बाहर निकली क्या देखा इमाम हुसैन ने कि ज़ैनब ने अपनी चादर अली अकबर पे डाल दी। बूढ़ा बाप बच्चे के बदन को पारा पारा नहीं देख सकता। अरबी जबान में इरबन इरबा उस वक्त को कहते हैं जब आप कुर्बानी का गोश्त काट कर तकसीम करते तो कटे हुए गोश्तों को इरबन इरबा कहते हैं। या इमाम ज़मान आप माफ कीजिए, बड़े सख्त मसाइब है। अली अकबर के लिए इरबन इरबा, टुकड़े टुकड़े। इसलिए आवाज दी ज़ैनब कुबरा ने, ए बनी हाशिम के जवानों आ जाओ, आबा लेकर आओ, अली अकबर के बदन को उठाओ। बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठाता। लअनतुल्लाह अलल क़ौमिल ज़ालिमीन। सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलैहा। परवरदिगारा बेहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद हमारी इस इबादत को बेतौर अहसन कबूल फरमा। इमाम अस्र को इज़्न ज़ुहूर इनायत फरमा, बीमारों को शफा आफियत इनायत फरमा। या रब लिबास तक़वा हम सबको दे। इमामुल मुत्तक़ीन की शफाअत इमाम अस्र की नज़र हम पर जारी और सारी हो। या रब हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत, उनके दरजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। बानियान मजलिस की जो तमन्ना आरज़ू है बारे इलाहा उन्हें अपनी बारगाह में बेतौर असरा मुस्तजाब फरमा। या रब इस वक्त, इस आन, इस लम्हा तू अपने ख़ास बंदों को किस तरह देख रहा है, क्या दे रहा है, वो सब हमें भी इनायत फरमा। परवरदिगारा अल महदी बेहतरीन नाम, इस इमाम बारगाह के मुंतज़मीन वॉलंटियर्स जो खुलूस के साथ काम करे बारे ला परवरदिगारा उन्हें अपने ख़ास और ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगारा इनके इस अजीम मिशन को कामयाबी तक ले जा। यूनिटी, मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद, सदाकत के साथ हमारी इन इबादतों में तकामुल इनायत फरमा। परवरदिगारा हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। कबूलियत दुआ के लिए सलवात।